Page number 215. Question number 3. Is there a four-sided figure in which all sides are equal in length but is not a square? मतलब एक फोर साइडेड फिगर है जिसकी सारी साइड्स तो इक्वल हैं पर वो स्क्वायर नहीं है. अब ऐसा कौन सी फिगर हो सकती है? मीन्स स्क्वायर की कंडीशन होती है कि चारों साइड इक्वल हो. तो वो तो ये भी यहाँ पर कह रहा है फोर साइडेड फिगर इक्वल इन लेंथ, पर वो स्क्वायर नहीं है. इट मीन्स उसके जो चारों एंगल्स है वो 90 डिग्री के नहीं है, अदर देन 90 हो सकते हैं. इफ सच अ फिगर एग्जिस्ट कैन यू कंस्ट्रक्ट इट. ठीक है, हम इसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं. पहली बात, इसको ड्रॉ करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना किसी भी लाइन का. सो टेक अ लाइन ऑफ 6 सेंटीमीटर. It's a line A, B, and I will draw perpendicular bisector of it. Perpendicular bisector का मीनिंग होता है मीन्स एक लाइन जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है और वो दूसरी लाइन इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है. देखो कैसे. I will open the compass more than half of it. See carefully, more than half of it. Draw an arc above the line and below the line from B. Similarly, from A, draw another arc cutting the previous arc above the line and below the line. Here I get 2 points, say C and D. Now join C and D. See carefully. Is this line dividing the first line in two equal parts? Yes, it's 3. 3 in this side and 3 in this side. And is it making an angle of 90 degree? Let's measure it. Yes, you can see it is 90. Now we will join A to C and D. Further, I will join B to C and B to D. In this figure, we can check the angles on the vertices is not 90 degree. It is 86. It is 86, less than 90. Less than 90. Its diagonals are bisecting each other at point O at 90. Okay. And this figure has all sides of equal length and it is called rhombus.